चलें जी. So like yesterday we were in the slide of the sample enterprise project management tool. अच्छा हमने इसको डिस्कस भी किया था. Let's have some more discussion. And like I was discussing about you, like आप कोई भी प्रोजेक्ट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाते हैं तो उसमें ये है कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन द फर्स्ट कॉलम, लाइक प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6 एंड गो ऑन सो ऑन. अच्छा फिर आप इसमें ये देखते हैं कि इसमें स्कोप कवर हो रहा है नहीं हो रहा, शेड्यूल है, बजट है या ऐसा कुछ और, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट. फिर आप नीचे ये मेंशन कर देते हैं कि जो हम उसमें सर्कल्स रख रहे हैं, इफ़ इट इज़ वाइट इट मीन्स इट इज़ गोइंग वेल. फिर हम लिखते हैं ग्रे है तो सम प्रॉब्लम्स हैं. देन वी पुट द ब्लैक. ब्लैक इज लाइक इट इज़ हैविंग द मेजर प्रॉब्लम्स. ठीक है. अच्छा इसके अलावा मतलब ये हो रहा है, ये मेंशन करने का ये मकसद होता है कि अगर कोई इसको देखना चाहे ना तो वो डायरेक्टली उसी पे जाए ना कि सबसे मेजर प्रॉब्लम्स किस में, तो फर्स्ट वो उस पे जाए, देन वो सम प्रॉब्लम्स पे आ जाए. उसके बाद जो है ना वो उस पे आ जाए कि यार चलो अब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सजेशन अगर देनी हो तो वो लाइक वाइट वाले सर्कल्स वो बाद में देखे. Okay, the next is the project management profession. Now, how it is as a profession. For example, if you are hired over there as a project manager, how will you deal all the things as a profession? The project of IT project, it is example from the IT, is in the list of the top 10 most in demand IT skills. Now, same goes for the petroleum. आप पेट्रोलियम इंजीनियर बनते हैं किसी भी ऑयल फील्ड में. First you go as a trainee, then assistant, then junior, senior, and so on. Like in the last, when you become the field manager, you becomes the project manager. Field manager is also project manager. Because आपने देखा होगा जो भी प्लांट्स लगे हुए होते हैं, वो प्लांट्स लग रहे होते हैं तो उसको फील्ड मैनेजर देख रहा होता है. लाइक एलपीजी प्लांट्स लग रहे हैं, न्यू वेल ड्रिल हो रहे हैं, उनकी कंप्लीशन हो रही है, तो वो आपने देखने. यू आर देयर एज अ मैनेजर. So it comes in the like in top of your priorities. And the next point is professional societies like the Project Management Institute have grown tremendously. अच्छा आपने देखा होगा कि ऑयल फील्ड्स के लोगों को ना सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं. सो उन सर्टिफिकेशंस में एक सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी होती है. नो डाउट यूर पेट्रोलियम इंजीनियर, आप वहाँ काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल 20 साल, what the time have been passed over there, but you also need to do some certifications, and the certifications are from the institutes which are project management institute, something like that one. And third point is project management research and certification programs continue to grow. The same thing which I told you just now कि आपको जो certifications हैं वो आप कर रहे होते हैं, it helps you to grow. ठीक है. Okay, moving towards the next slide. Now there is top 10 most in demand IT skills. अच्छा, same goes for us petroleum engineer. As a petroleum engineer, in petroleum engineer, what is your demands? As I told you, you have some certifications. यहाँ पे क्या कहा गया है? It is a sample for you. अब देखिए, number one is the SQL database. Then there is Oracle, C++, Visual Basic, e-commerce, Windows, NT and Windows, Java, Security, Project Manager, Network Engineer. हमारे पास भी ऐसा ही है. लाइक इन पेट्रोलियम जब आप सीनियर हो जाते हो तो आपको भी कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं. सीनियर में भी चाहिए होती हैं, जूनियर में भी चाहिए होती हैं, बट यू नीड सम सर्टिफिकेशंस. और वो सर्टिफिकेशंस फिर आपकी जो सैलरी होती है, एनुअल सैलरी आपका है, या जो आपकी प्रमोशंस हो रही हैं, जो आपकी इंक्रीमेंट्स हो रही हैं, वो वहाँ पे काउंट हो रही होती हैं. यहाँ पे वो जो एग्जांपल दिया हुआ है वो फ्रॉम द आईटी
field, but it is also related to us as a petroleum. Now, moving towards the next slide, now there is project management knowledge continues to grow and mature. PMI hosted their first research conference in June 2000 in Paris, in France, and the second one in the Seattle in July 2002. Now, let me share with you one thing. Whenever you go to the conference, any conference, हमारे पास जो पेट्रोलियम की होती है ATC ईयरली होती है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी अगर आप जाएं तो यू मीट विद द प्रोफेशनल्स. कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि आपकी नेटवर्किंग हो. वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी बात बताएं कि आजकल रिसेंटली हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, इसकी डिमांड है, ताकि आप उसको देखें एंड यू कैन ग्रैब इट. अच्छा, फॉर एग्जांपल द रिसर्च विच इज़ गोइंग ऑन, तो उसमें हम रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हम ये बता रहे होते हैं कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, फला यूनिवर्सिटी में, फला एकेडमिया में ऐसे काम हो रहा है. ऐसे ही रिसर्च पेपर्स कंपनीज भी शो करती हैं, कंपनीज भी प्रेजेंट करती है. उसमें ये हमें पता लगता है कि फला कंपनी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये काम हो रहा है, वहाँ पे ये इक्विपमेंट्स हैं. ऐसे ही हमें नॉवेल्टी पता चल जाती है, न्यू न्यू चीज़ें जो भी हमारी पेट्रोलियम फील्ड में हमें वो पता लगती है. क्या डिमांड है, हमें कैसे उस चीज़ को कॉप अप करना चाहिए, उसको कैसे हम लाइक वी कैन ऐड इन आवर प्रोफेशनल स्किल्स. So these are the conferences which are held because of these reasons. There are also plenty of other reasons, like in some of the reasons are these. अच्छा, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में भी होती है, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ओवरऑल इंटरनेशनल यू कैन गो, इट इज़ एवरीवेयर इन UAE. देन petroleum conference, so like it is in each and every country. Now the next point over here is the PM book guide 2000 is an NC standard. अब देखिए हमारे पास भी एक बुक है, पेट्रोलियम ग्लॉसरी इज़ अ बुक फॉर अस. API ग्रेड्स की एक बुक आती है ड्रिलिंग इंजीनियर्स, अगर आपका कोई जानने वाला होगा ऑयल फील्ड में तो उनके पास एक API ग्रेड्स होते हैं जिसमें वो ड्रिलिंग एंड केसिंग के ग्रेड्स देख रहे होते हैं. ये समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके. अच्छा, PMI certification department earned ISO 9000 certification. This is, there is a department which which checks your quality and each and everything, and then give you some certification. The last point is hundreds of new books, articles, and presentations related to project management have been written in recent years. आपने अगर नोट किया होगा, जब आपकी FIP हो रही होती है तो हम जितने टीचर्स होते हैं हम ये कह रहे होते हैं कि यार आप लिटरेचर रिव्यू करो, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में ये होता है कि आपको रिसेंट चीज़ पता लग रही होती है. जो लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि hundreds of new books, articles and presentations related to the project management, ऐसे related to drilling, to production, to reservoir simulation, whatever the topic is related to that field have been written in recent years. तो दुनिया में हज़ारों जर्नल्स हैं, उसमें हज़ारों चीज़ें न्यू आ रही हैं. तो हम आपको ये कह रहे थे, आप देखो उसमें क्या न्यू आया, कैसे आप उसको अपनी फील्ड से रिलेट करो, कैसे आप उसको बनाओ. अच्छा, जस्ट अ सेकंड प्लीज, let me write your today's attendance. आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर अपना रोल नंबर लिखना चाहें चैट पे तो लिख सकते हैं. जस्ट राइट योर रोल नंबर.
Okay, today I got 0203. Then I got 31. Okay, मैं इससे पहले लिख लेता हूँ, एक सेकेंड. ओके, इससे पहले है 6044. ओके, गोइंग अप. अच्छा, चलिए 31 के बाद 17 भी है. ठीक है. 44 से पहले है 15 and 32. Then we have 261949. से पहले है 2430 and 22. Okay, before 22 was 5714 and 37, right? उससे पहले है 55. अच्छा, I got some new. There is 41. ठीक है, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. एट द लास्ट आई विल आल्सो रिक्वेस्ट, जिसने रोल नंबर नहीं लिखा तो वो अपना रोल नंबर लिख ले. अगर आपने लिख लिया है तो इट्स फाइन, यू आर प्रेजेंट. Okay, let's continue our lecture. In the last, I will request you to please write your roll number. अगर आपने अभी नहीं लिखा, लिख लिया है तो उसको फिर ना लिखेगा. ठीक है, 4145. ठीक है, चलें. लास्ट में मैं आपसे एक मत और रिक्वेस्ट कर दूंगा. ओके जी, लेट्स कंटिन्यू. सो दीज वर द थिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं. लाइक एज अ मैनेजर, यू मस्ट हैव सम सर्टिफिकेशंस. उन सर्टिफिकेशंस में बेसिकली आपको यही सिखाया जाता है कि ये प्रॉब्लम अगर हो, या ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ चार्ट बन रहे हैं, ऐसे और भी होते हैं, वो चार्ट कैसे बने हैं, उसको कैसे रीड किया जाए, और फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे तरफ के इम्प्रूव किया जाए, टू इम्प्रूव योर क्वालिटी, टू इम्प्रूव योर प्रोजेक्ट जिसके आप हेड हैं. आप उसको टाइमली कंप्लीट कर लें, आप उसको विद इन द स्कोप रखें, द बजट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इसमें देखें, द पीएमआई प्रोवाइड सर्टिफिकेशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल. आपने नोट किया होगा, कुछ अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो लिंक्डइन पे थोड़े बहुत एक्टिव हैं, तो अक्सर का कुछ लोगों के प्रोफाइल में ये लिखा हुआ होता है पीएमपी. तो बेसिकली उन्होंने वो सर्टिफिकेशन हासिल की होती है, और ये लिखने का मकसद भी होता है कि जब आपको कोई जॉब, हाउ टू से, द वन हु इज एडवर्टाइजिंग द जॉब, जब वो आपको कांटेक्ट करे तो वो आपके प्रोफाइल में पहले देख लेगा, फिर उसको समझ आएगा या इसको पीएमपी आती है, या सर्टिफिकेशन ऑफ पीएमपी. इट मींस ही कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. If someone of you is not active on LinkedIn, please try to make your profiles, try to be active. LinkedIn is there, Indeed is there, there are several other websites, because you are going to be graduated after almost 6 months. तो ये चीज़ें पर आपको काम आएंगी. And networking is
Very important. Yes, it is very helpful, not only in getting the job, but in many other things. So please try to make it a suggestion for all of you. Okay, now going towards the next point. A PMP has documented sufficient project experience. अब वो उसमें बता रहा है कि what is a PMP? Now PMP is a sufficient project experience. It is a document agreed to follow a code of ethics and passed the PMP exam. उसमें आप कुछ ethics पढ़ते हैं, आप उनको पास करते हैं, आपने प्रे एग्जाम दिया होता है, आपने वो एग्जाम पास किया होता है, and then you have got this certification. A number of people earning PMP certification is increasing quickly. अच्छा, लेट मी डिस्कस विथ यू. देखिए, पेट्रोलियम में भी हम जो सर्टिफिकेशंस कर कर रहे होते हैं ना, अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, गो फॉर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आप में से कुछ रिजर्वर सिमुलेशन में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ ड्रिलिंग में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ प्रोडक्शन की जॉब्स जैसे सिटाइजिंग है, परफोरेशन है, वर्कवेयर जॉब्स है, फिशिंग जॉब, कुछ उसमें. तो सबसे पहले आप अपना एरिया उठाएं, ड्रिलिंग, रिजर्वायर, प्रोडक्शन. उसके बाद फिर आप उसमें और थोड़ा नैरो जाएं. लाइक आई टोल्ड यू, देयर आर 4 एरियाज इन प्रोडक्शन. परफोरेशन जॉब हो गई, सिटाइजिंग हो गई, और जो फिशिंग है, वर्कवेयर. अगर आप उसमें से जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उस एरिया को पिक करें. देन गो फॉर द सर्टिफिकेशन. फिर उस एरिया में जो सर्टिफिकेशन हैं, आप उसमें जाएं. और इफ़ इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल गेट अ जॉब, तो जिस जिस एरिया में आपको जॉब लग रही है, फिर आप ऑब्वियसली उसी एरिया के सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं. और कंपनी भी आपको ही कह रही होती है कि यार फला सर्टिफिकेशन आइए आप कर लो, फला सर्टिफिकेशन आइए आप कर लो. सम कंपनीज स्पॉन्सर यू, सम कंपनीज doesn't sponsor you, so you have to do on your own. Well, the area is defined like this one, कि आप इसमें अगर उलझ जाएं कि सर कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, तो आप ऐसे एरिया अपना डिफाइन कर सकते हैं. The last point is PMI and other organizations are offering new certification programs. It is discussed in the appendix B. Now there is a graph which is drawn growth in PMP certification from 1993 to 2002. Yes, it is very old, लेकिन it is a sample for all of you. और ऐसी certifications आजकल भी बढ़ रही हैं. हम देखें, इसमें इन्होंने एक 9 years का एक स्टैटिक्स उठाया हुआ है. Now, there is a very sharp increase in the certifications. In 1993, there were only 1,000 people जो PMP certified थे. In 2002, there are around 52,000 people. और अगर आप आज की हिस्ट्री में देख लें, if you just Google it out, or you can just ask the Chat GPT, it will let you know, and I think it must be in the hundred thousands, 1 million, something like that one. अगर मैं अक्सर औकात लोगों की प्रोफाइल्स में ये चीज़ देखता हूँ on LinkedIn, though it is not, it is like I don't have the certification, but I used to see and I used to ask them, what is the certification, आपने इसको mention किया हुआ है, इसमें क्या है. फिर उसमें हर किसी का पता नहीं अपना मकसद है. So you can also Wikipedia it, or you can also see it. So the thing is that we are looking at the statistics, the PMP, in the growth in the PMP certification. Yes, it is increasing sharply, and it is increasing day by day. Okay, there are some students who have just messaged, like 6120. Okay, I'm adding their roll numbers. 61, comma 20, and 37 and 52. 37. Okay, in the last of whenever your friend is coming, you can ask him to just write a roll number. In the last, I will again ask you
to write the roll numbers. ठीक है जी, 42 जी आपका हो चुका है आई थिंक. ओके 42 आई एम राइटिंग अगेन. ओके लेट्स कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन. सो अब इसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा कि एथिक्स. यू मस्ट बी लुकिंग थिंकिंग के सर एथिक्स कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स क्या होते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वन. नाउ एथिक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर ऑल प्रोफेशन. यस इट इज. नाउ ऑनेस्टली अगर आप अपनी लाइक स्टूडेंट लाइफ को भी देख लें, हम अपनी रियल लाइफ को भी देख लें, प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे घर में, हमारी दोस्ती में, in our professional life, any profession you are having, you are a teacher, you are an engineer, wherever you are going. वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं. तो यू नो कि आपको हर प्रोफेशन में एथिक्स चाहिए. कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कोलिग्स के कोई से बात करने के तरीके होते हैं. आप कोई एक स्कोप होता है, आपने उस स्कोप के अंदर ही काम करना है. आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है. आप अक्सर को लोगों को कहते हैं यार ये मेरे उसमें नहीं है, लाइक आई कैन नॉट डू इट, it's not under my umbrella. So there are some ethics. As a project manager, yes, there are some ethics. Most of the time, you need to convey a message to any of your subordinate, but you cannot say him directly. You have to use some ethics. Sometimes you have to convey the message indirectly. Sometimes you have to convey the message by some other means, asking some of his friend. So there are some ethics. You have to follow those ethics. Okay, the next point is project managers often face ethical dilemmas. उनको कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जो एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे होते. अच्छा, उस टाइम you don't have to be hyper. You don't have to react directly. You have to tackle the things very, very carefully. Because if you're a manager, there are 100 people, there are 200, there are 1000, sometimes there are many thousand people working with you. अब देखिए 1000 लोगों का माइंड अलग है या 100 लोगों का माइंड अलग है. आपके माइंड से आपसे हम ख्याल लोग आपको 5 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 20 ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 पीपल्स और 1000 पीपल्स लाइक ऑल आर सेम एज व्हाट यू आर थिंकिंग. ऐसा नहीं होता. सो most of the time project managers often face ethical dilemmas, but they have to tackle with that. They have to deal with those people and उनको भी साथ लेके चलना होता है. And the third point is, in order to earn the PMP certification, applicants must agree to the PMP code of professional conduct. Yes, ये तो होता है, like obviously whenever you are going for any certifications, आपने उसके कोड को accept करना होता है, and then you go for the certifications. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको एक चीज़ और शेयर करता हुआ चलूँ. लाइक समटाइम्स ऐसे भी होता है इन पेट्रोलियम. व्हेन आई वाज इन सिंजोरो फील्ड, तो वहाँ पे एक प्लांट रीलोकेट होके आ रहा था फ्रॉम दखनी ऑयल फील्ड. अब उसमें ये इशू हो रहा होता है कि जब आपके पास प्लांट लग रहा है, वहाँ पे जब स्वीटनिंग टावर इंस्टॉल हो रहा था इन एलपीजी प्लांट, तो अब देखिए वहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट के पीपल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, और एक कुछ लोकल वेंडर्स भी काम कर रहे हैं. लोकल वेंडर्स का काम क्या है, किसी ने बेस बना ली है, किसी को वो टावर इंस्टॉल करना है, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है. सो आपको उनके साथ भी डील करना होता है. अब ऊपर से हेड ऑफिस इज जस्ट आस्किंग यू कि यार आपकी प्रोग्रेस क्या है. वो ये नहीं पूछते कि आपका लोकल वेंडर आज आया नहीं आया, आया तो उसने कैसे काम किया, क्यों काम नहीं हुआ. नॉर्मली in Pakistan there are several other issues they used to face. Some strikes are there, some unions are there. There are plenty of problems. Honestly speaking, you could not even imagine. But the thing is that how you manage it. अगर आप उनको मैनेज कर लेते हैं तो these all are very normal for you.
So in when we were installing that sweetening tower, so the local vendors, he was saying the base, जो उसमें base बनाई गई है वो सही नहीं बनाई गई. So what to do at that time? You gonna call the civil engineers again? You gonna destroy the base and then you ask them to make a new one? It will take time. क्योंकि वो जो foundation lay होती है, foundation is of concrete and it takes so much time to be, even dry होने में उसको बहुत time लग जाता है. So what they did at that time, they asked a mechanical engineer to come and उसकी जो, like there was some millimeters difference in the base of that one. उन्होंने कहा कि यार आप इसकी थोड़ा मिलीमीटर्स में चेंजिंग कर लें, तो टावर की जो बेस है उसमें मिलीमीटर्स थोड़ा, लाइक यू कैन जस्ट ड्रिल इट एंड मेक द डिफरेंस. सो इट्स डन. उसके बाद उन्होंने उसको नट्स लगा लिए और स्टड्स लगा दिए. इट वाज फिक्स्ड. इट टुक अस फॉर 1 day. अब देखिए वहाँ आपने ये देखना होता है कि एक काम एक दिन में हो सकता है और वही काम 6 दिन ले लेगा या 12 दिन ले लेगा. अब क्या करना है? अब आपके कहने पे कोई न्यू टावर तो नहीं बनने वाला. सो व्हाट दे डिड, they just changed it and the field manager just finished it in a 1 day. कि उसके बाद the tower is installed. Yes, after some time it is working and until now it is working. It's going on. Okay, so moving to the next slide, the project management software. As I've already discussed with you, देखिए जैसे reservoir simulation में हम करते हैं, हम forecast करते हैं, हम डेटा देते हैं, हम करंट डेटा देख रहे होते हैं. सो ऐसे ही हर फील्ड में सॉफ्टवेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको ये बताते हैं कि क्या चीज़ आपके पास अभी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं और आपके पास फ्यूचर फोरकास्ट क्या होगी, उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. वो रिजर्वायर में हमारे फील्ड में आ जाए, वो ड्रिलिंग में हम देख लें, या प्रोडक्शन, लाइक आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 50 years ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा. सो सॉफ्टवेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, अब इसमें आ जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या है. अब देखें बाय 2003 there were hundreds of different products to assist in performing project management. 2003 तक क्या था कि कुछ 100 तक एक like products थी that were helping for performing the project management. अच्छा, 3 main categories of tools exist. Number 1 is low end tool. Handle single or smaller projects well, cost under $200 per user. फिर एक इसमें मीडियम रेंज कहें आप या मिड रेंज कहें, मिड रेंज टूल्स आ जाते हैं. नाउ दैट हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड यूजर्स, cost from $200 to $500 per user. Popular. The third one is high-end tools, also called enterprise project management software, often licensed on a per user basis. अब ये उसकी 3 कैटेगरीज हैं. एक लो हैं, कुछ मिड हैं, मीडियम हैं, कुछ हाई हैं. ऑब्वियसली जो लो होंगे उनमें ऑप्शंस भी कम होंगे, उसमें कोई भी चीज़ सिमुलेट करने के लिए लिमिटेशंस भी ज़्यादा होंगी. कम टूवर्ड्स द मीडियम वन, दोज विल बी नॉर्मल, कुछ लिमिटेशंस उसमें भी होंगी. लेकिन जो हाई रेंज है ऑब्वियसली उसमें यह है कि उसकी लिमिटेशंस बहुत कम होगी और उसमें हम उसको ज़्यादा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हम उसमें सिमुलेशन कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस इन दैट, और इसी की वजह से उन तीनों की कॉस्ट चेंज हो जाती है. अब जो हाई रेंज उसमें आप देखें, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ लाइसेंस्ड. या आपने सिमुलेशन में अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया होगा कि सॉफ्टवेयर हमारे पास लाइसेंसेस कम होते हैं, हम क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं. उसमें फिर ये होता है कि हम जो उसमें लॉन्ग इटरेशंस हैं ना, लाइक इफ़ यू टेक नंबर ऑफ वेल्स इन reservoir eclipse or any software using the reservoir, आप 5 या 10 या 20-50 वेल्स ले लें, उनकी आप डेटा पुट करें, फिर आप उन सबको फोरकास्ट करें, तो कहानी कहीं ना कहीं जाके लिमिटेशन आ जाती है. इफ इट इज़ अ क्रैक वर्जन, if it is a licensed version, there is no any error, you will get the final data.
सो इसी वजह से हमें लाइसेंस जो है ना सॉफ्टवेयर वो चाहिए होते हैं, और हाँ फिर वो ऑब्वियसली एक हाई एंड टूल्स हैं। अच्छा, moving toward the next point, Project 2002 now includes a separate version for the enterprise project management. ये उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दी गई है। अच्छा, हम अगर रिजर्वायर के सॉफ्टवेयर से डिस्कस कर लें जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, हालांकि इसके अलावा दुनिया में बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन अगर हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं लाइक इक्लिप्स है, CMG है, IPM है, IPM के अंदर काफ़ी हैं, in integrated production modeling IPM you have the MBEL, you have the Prosper, Gap, Reveal, and I think two more. Total there are 6. अच्छा, ऐसे ही आपका एक Acrin है for the well testing, and if I'm not wrong थोड़े और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. So there are many reservoir softwares, there are many production softwares, there are many drilling softwares. Those all softwares, if they are licensed, they are very good. If they are cracked, they have some limitations. But those all softwares are being used everywhere. अच्छा, तीस सॉफ्टवेयर जो हैं, ये जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये सारी इक्वेशंस पे बनाए जाते हैं. आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिजर्वायर फ्लूइड्स में कुछ कोरिलेशंस पढ़ी होगी. स्टैंडिंग्स कोरिलेशन थी, विचर डिजीज थी, विस्कस बेक थी, ग्लासोस इक्वेशंस और कुछ और भी होंगी, मे बी मेरे जहन में भी नहीं आ रही. तो वही सारी इक्वेशंस इन्हीं सॉफ्टवेयर में यूज़ की होती हैं. आप जो डेटा पुट कर रहे होते हैं, वो डेटा जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा होता है सॉफ्टवेयर में, वो वही फार्मूलाज यूज हो रहे होते हैं जो आप अपने न्यूमेरिकल्स में कर रहे होते हैं. लाइक रिजर्वायर के जो आपने न्यूमेरिकल्स किए, ड्रिलिंग के जो आपने न्यूमेरिकल्स किए, उसमें जो जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए यूजिंग एनी फार्मूला, तो भी होते हैं. और जैसे आप डेटा देते हैं तो सॉफ्टवेयर वही फार्मूलाज वही इक्वेशंस उठा रहा होता है, और फिर उसको कुछ चीज़ें और भी उसमें ऐड होती हैं, एंड लाइक ही इज गिविंग यू सम इटरेशंस and giving the final result. और इटरेशंस या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऐसी हो रही होती है जैसे आप मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं, लाइक यूजिंग द डिफरेंशियल, लैप्लास, कैलकुलस, जो जो मैथ्स हैं, दिस ऑल आर यूजिंग इन दिस सॉफ्टवेयर्स. That is a long. I think this is about to end. We have just last slide for this one, then we will be starting a new one. In the last it is there you can apply project management to many areas. अब ये वही बात हुई जैसे हम स्टार्टिंग में आपको बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि यार ये आईटी की एक एग्जाम्पल है, हम इसको एज अ पेट्रोलियम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं. तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि यू कैन यूज इट इन अदर लाइक आईटी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, इवेंट प्लानिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर. The first point is project management applies to work as well as personal projects. कुछ आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं. If some of you are using the freelancing, तो उस फ्रीलांसिंग में भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. उसमें भी आपको प्रोजेक्ट देने वाला ये कहता है कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे इतने टाइम में करके दो, इतने बजट में करके दो, और ये मेरे आउटकम्स होने चाहिए, ये मेरे रिजल्ट्स होने चाहिए. सो इफ़ यू take that project, if you do it and submit it back, so obviously it is your personal project. तो मैनेजमेंट हमें वहाँ भी चाहिए होती है. नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो मैनेजमेंट भी नीड इन आवर डेली लाइफ. Management applies to many different disciplines. The same goes for us as a petroleum engineer. And the third point is project management skills can help in everyday life. अगर आपके पास skills हैं, you know how to deal it, तो आपके daily life में आप उसको use कर सकते हैं. How to complete the things, how to complete them timely, how to complete them in the specified budget. So it is used in our daily life.
अच्छा, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने रोल नंबर नहीं लिखे हो, प्लीज लिख लें इन द चैट। ओके, आफ्टर 42 I have 3933 2529 3440, sorry, 34 59। अगर आपने पहले अपना रोल नंबर लिख लिया तो फिर ना लिखिएगा। इट्स डन, मैंने वो सारे नोट कर लिए, अदरवाइज मेरे पास चैट में भी आ रहे होंगे सारे वो। I think 32, let me see the attendees, 32 या 33, ठीक है। So someone of you if cannot, like अभी नहीं आ सका तो he can see the recording and then he can email to me। और आज के अटेंडेंस व्हेन आई विल मार्क आई विल आस्क यू इन द ग्रुप, तो हो सकता है उसमें अगर someone is missed from me so please let me know। I will tell you कि यार this is attendance and like these are absentees, so please मुझे बता दीजिएगा। 59, yes जी 59, your roll number is there, ठीक है। सिक्स टू, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी ऐड 62। सिक्स वन, ठीक है ठीक है, नो इश्यूज। 61। I need to basically like mark this attendance within 24 hours ना, तो मैं आपको ग्रुप में भी एक मरतबा पूछ लूँगा, तो उसमें मुझे बता दीजिए यार कोई रह गया है तो, क्योंकि आप अगर वो लिख देते हैं ना अपना रोल नंबर तो वो आपका चैट में आ जाता है। अगर मैंने नहीं भी लिखा और मैं उस टाइम पे भी फिर भी उसको रीचेक कर लूँगा तो विद इन द चैट आई विल फाइंड दैट रोल नंबर। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नहीं भी लिखेंगे, अगर आप लिखना भी भूल गए फिर भी आपकी एक अटेंडेंस मार्क हो जाती है। व्हेन आई विल एंड द मीटिंग इन द लास्ट एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है जिसमें लिखा आ जाता है कि फला रोल नंबर हैज ज्वाइंड ड्यूरिंग दैट टाइम इन दिस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, वो सारी एक डिटेल्स आ जाती हैं। बट द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव ज्वाइंड इट। ठीक है, 61 के बाद तो इसका रोल नंबर नहीं आया, ठीक है।
Okay, we can wait for just 5 minutes, then we will end the meeting. अगर आप में से कोई like someone has forgot to write his roll number, please just write your roll number in the chat. अगर आपने लिख लिया है तो it's fine. 2 3 ठीक है. चलें, it's okay. I have written all of your roll numbers. Let me just stop recording.